Okay. Last numerical we did up to the basic feasible solution. Correct? We'll start with the optimization today. Okay. So we'll put the allocations first. Yes, sir. Uh, okay. So last time उसमें कुछ तो एक गड़बड़ हो गया था. That means हमने उसमें डमी ऐड नहीं किया था. करेक्ट? Yes, sir. Yes. So The row में. रो में. So this was the one. मैंने फिर बाद में वो पूरा कंप्लीट करके रखा है. I believe even you guys would have completed it. This is what allocation I have got. आप देखिए यहाँ पर मैंने ये वाला सबसे पहले चूज किया था इंस्टेड ऑफ दिस. ओके. सो मेरा 3 यहाँ पर एलोकेशन आया, 2, 1, ये वाला बच गया. फाइन. सो आई जस्ट पुट द allocations here and then we'll start working around. So let me see. 4, 4, 2, 3, 3 and 8. No, sorry, 1 भी है. उस हिसाब से मुझे allocations डालने हैं. Let me put the allocations first. अभी जब आप ये जब बनाते भी हो ना, तो उसमें कोशिश ये करने का, अगर आप शिफ्ट दबा के करते तो परफेक्ट राउंड आता है अपने आप ही. Go to format. And right click on edit text. 4. Four, 4, 2, 3. जस्ट मैं इसका भी कॉपीज कर रहा हूँ. Perfect. Whenever you have made the allocations, always check whether the row and column constraints are getting satisfied. Okay. So along the row 8, total is 8. Here 4 plus 2 plus 1. So this is
तो गड़बड़ है। सर वो 3 डमी में यहाँ पर 4 और 1 चाहिए तो बनाएगी मैं क्या बनाएगा ये वाला 3 डमी में है। बराबर। अभी करेक्ट है। 4 + 1 5, 4 + 2 6 + 3 9 और ये 3 परफेक्ट। So this is how you check whether the basic feasible solution that you have got is right or not. Okay. अब हम U1 और V1 का calculations करना शुरू करेंगे. So we'll start with U1 equals to 0. Okay. If I say U1 equals to 0, this cost element is 3. So to get V5, I need to find out 3 minus 0. क्या है for allocated cells? This cost Cij is equal to Ui plus Bj. So that means 3 is equal to 0 plus x. So what would be the value of x? 3. 3. So we have got 3. मतलब हम डायरेक्ट सीधा 3 minus 0 करेंगे तो हमको मिल जाएगा. Okay. Now since I have already got this value, अब मुझे बाकी का values मिलेगा क्या? Can I find out other values? Are there any connecting values which can help me in identifying the other ones? No, sir. तो इसका मतलब ये है कि शायद ये degenerate solution है. Is that so? Yes, sir. Is it a degenerate solution? How do we check for degeneracy? A solution is said to be degenerate if number of allocations is less than m plus n minus 1. m plus if number of allocations are less than m plus n minus 1. किसने आंसर दिया था वो? Sir, Neha. Yeah, very good. If the number of allocations are less than m plus n minus 1. मतलब आपका इधर पर m कितना है? m is number of rows. So 1, 2, 3, 4. So 4 rows plus number of columns कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. 5 columns minus 1 कितना आया? 8. 8. What is your number of allocations? 7. Number of allocations is 7. So that means this is a degenerate solution. And in case of a degenerate solution, we need to include epsilon. Correct? Yes, sir.
ओके, सो एप्सिलॉन कहाँ पर डालेंगे? So the least unallocated cell. Least first unallocated cells, but at the same time we need to ensure that it doesn't Not form a form. loop with any of the allocated cells. Okay, needs to be inserted in least unallocated cell where no loop is getting formed with the allocated cells. Clear? तो अभी कहां पर हम डालेंगे एप्सिलॉन? कभी भी जो एक कॉलम या रो जहां पर का वैल्यू आपने लास्ट कैलकुलेट किया ना, उसी का रो या कॉलम में आपको डालना होगा. सो देखिए, ये हमने लास्ट वैल्यू कैलकुलेट की थी, इससे रिलेटेड. So we got V5 and we have got U0, U1. So either in this row or in this column will help you in connecting to the other rows and columns. तो अभी अगर इसमें मैं लीस्ट कॉस्ट देखूं तो 5866, इधर पर 540. So 0 is the least. So I would prefer to insert an epsilon here. But if I insert an epsilon here, what will happen? Am I getting any loop there? मान लो इधर से ऐसे क्या कहीं नहीं जा सकता, इधर से इधर आएगा. That would be the first jump. Then it can go to this side, that is the second. Okay, third, fourth, fifth, फिर वो अटक जाएगा. Instead of from here, if it goes here, then again it's not possible. So it is not forming a loop there. So we can use that as a place for our epsilon. Clear? Yes, sir. Now, since we have already placed our epsilon, now can we identify the values? यहाँ पर एक और आएगा ना, U4 मैंने नहीं निकाला. U4 is also required. Okay, so can I calculate U4 now? This 0 is equal to Ui plus Vj. So Vj is 3. So what would be the value for U4? 0 minus 3, correct? 0 minus 3 would be? -3. Minus 3. Okay, इतना मैं सभी का फाइन, इतना तो कम से कम फटाफट रेस्पॉन्ड करना है. Now, what would be the value for V3? We can calculate V3 now, correct? So 0 minus of -3 would be how much? 3. 3. Now since I have got V3, can I calculate U3? Yes, sir. How much will it be? 6 minus 3. 6 minus 3. 3. 3. Now, what about V2? 1. 4 minus 3, it would be 1. Now, since I have got that, can I, what about this? अभी I cannot go to this because मेरे पास में ये वाली value already पता नहीं है. So, better to
come to this cell and see. This is V4 will be equal to 6 minus 3. So कितना आएगा V4? 3. 3. 3. उसके बाद में next क्या आएगा? Now since I know V4, can I calculate U2? हो जाएगा ना? So U2 would be 6 minus 3. Again 3. Correct? Now based on this, can I calculate V1? V1 will be how much? 1. 4 minus 3, 1. Very good. Now, since we have already done this thing, now the next thing is to identify the opportunity cost values. We will just simply start calculating the opportunity cost values. We'll put them within the bracket. Fine. So पहले ये सेल से शुरू करते हैं. How do we calculate the opportunity cost values? Cij minus Ui plus Vj. So here Cij is what? 5 minus 0 plus 1. 5 minus 0, 0 plus 1 दोनों ऐड करना है. तो 1, 5 minus 1, it would be 4. What does this indicate? That if an allocation comes in this cell, it will increase the cost by 4. जितना allocation आएगा into 4. Clear? Yes. Is everybody clear with this? Yes, sir. Sir, can you please repeat? This says if an allocation comes in this cell, it will increase the cost by 4. Total cost TCA जो है वो आपका 4 से बढ़ जाएगा. ओके अगर उसमें मान लो 2 यूनिट आए तो 2 into 4 8 से बढ़ जाएगा. अगर 3 यूनिट्स आए तो 3 into 4 12 से बढ़ जाएगा. ओके Okay, sir. So that's the reason why we call it as opportunity cost. Okay. This is how you indicate an opportunity cost. Fine. What about opportunity cost for this cell? 8 minus 1 plus 0. 1 plus 0 is 1. 8 minus 1 is 7. What about the next unallocated cell? यहाँ पर opportunity cost कितना आएगा आपका? 0 plus 3 is 3. 6 minus 3? 3. 3. Are you all also doing along with? Yes, sir. Or do you want me to hold so that you can draw the table? Yes, screenshot ले लो, whatever is convenient to you. पहला वाला स्क्रीनशॉट लिया है ना आपने? ये वाला थोड़ा हैंडराइटिंग गंदी है, कोई बात नहीं, इतना तो समझ सकते हैं, माफ कर देना उसके लिए. Okay, so what would be the opportunity cost here? 0 plus 3 is, sorry, in this particular case 0 plus 3 is 3. 6 minus 3 is 3. तो ठीक है, वो सेम ही रहेगा. Now let us look at opportunity cost
for the cells in the second row, unallocated cells. यहाँ पर क्या आएगा? 3 plus 1 is 4. 7 minus 4 is 3. 3. What about this? What would be the opportunity cost here? 1. 1. 1. Very good. यार आप लोग जब ऐसे आंसर देते हो ना, ऑनेस्टली बोलूं, मेरा I feel so good. What about this? -1. -1. अभी देखो -1 आ गया, इसका मतलब ये है कि हमारा कॉस्ट और फर्दर रिड्यूस होने के पूरे चांसेस हैं। करेक्ट। देखते हैं कहीं कोई और सेल है क्या जिसमें इससे बड़ा नेगेटिव वैल्यू हो। ओके, so let us look at the other cells now. We'll complete all the unallocated cells and then we will work on it. Now what about this? 3 plus 1 is 4. 8 minus 4 is 4. good. What about this one? यहाँ पर क्या है? -2. 3 plus 3 is 6. 4 minus 6 is -2. -2. So अभी देखो और भी अच्छा फील हो रहा होगा, हमको -2 भी मिल गया, मतलब पर यूनिट एलोकेशन 2 रुपए कम होंगे उधर पर। हो सकता है वो थाउजेंड्स में हो या लैक्स में हो। ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द अदर सेल्स. How much would be the value here? -3 plus 1. -3 plus 1 is -2. 0 minus of -2 would be 2. समझा क्या कैलकुलेशन किया? I'm just writing the calculation here. See, it is Cij minus Ui plus Vj. Correct? So, अभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में Cij is 0 माइनस ब्रैकेट के अंदर Ui is -3 plus Vj is 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये ब्रैकेट के अंदर का -3 plus 1 will become -2. 0. So that means this becomes 0 minus of -2. That means it is 0 plus 2, which is 2. Clear? Yes, sir. अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये कैलकुलेशन क्यों बता रहा हूँ। लोगों की मिस्टेक्स यहाँ पर ही होती है। काफी लोग यहाँ पर मिस्टेक्स कमिट करते हैं। Okay, so you need to be just a bit careful when you are doing this. So this is 2. What about the next cell? 2, sir. Again same 0 minus 3 और ये 1, तो सब कुछ सेम है, तो it would be 2. What about this cell? 0. 0 means if an allocation comes in that cell, it will not increase the cost, but it will give you another set of allocation. So that means an alternate solution can exist. Okay, now since we have got -2 here, okay, so what we'll do is we will choose that for allocation. So इसको just duplicate कर लेता हूँ, and I will, since we have got -2 here, we will start with making a loop. तो कैसे करेंगे? रीएडजस्टमेंट्स करने का काम करेंगे। तो
लेट मी जस्ट डुप्लीकेट अ कॉपी. यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे +1. हाँ, और इसका कलर रेड कर देते हैं सो दैट वी आर एबल टू डिफरेंशिएट इट. फाइन. तो हम यहाँ पर से +1 शुरू करेंगे. करेक्ट. आपका लूप कैसे बनेगा? दिस वुड बी -1. बराबर ना? देन +1 and correct. Your loop would be from this cell to this cell, then here, then back here, and then again to the originating cell. Perfect. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now, फिर हम क्या करते हैं? What would be your theta? Theta value would be correct. Correct ना? Yes, sir. So what would be your theta? यहाँ पर क्या आएगा वैल्यू थीटा का? 0. -1 इधर है, -1 इधर है, so theta would be epsilon. ठीक है? Clear? Theta would be epsilon. Now what is happening here is, if I add epsilon in this cell, okay, there is no allocation. So 0 plus epsilon would be epsilon. What about this? 2 minus epsilon will remain as 2. 3 plus epsilon will remain as 3. And epsilon minus epsilon will actually get eliminated. So that means what has happened here is only just epsilon has shifted its place. Okay, epsilon has shifted its place. So आपको इस तरह का भी सिचुएशन आ सकता है कि आपको नया एलोकेशन कुछ नहीं मिला, सिर्फ एप्सिलॉन अपनी जगह से शिफ्ट कर गया. ओके, आर वी क्लियर? Yes, sir. So what we'll do is we'll create a copy of this and we'll shift the epsilon. तो यहाँ पर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी हम सब हटा दे रहे हैं और ये एप्सिलॉन को हमने इधर पर शिफ्ट कर दिया बिकॉज दैट इज व्हाट वी हैव गॉट आफ्टर रीएलोकेशंस. और ये +1 -1 सबको I will delete, and I will also delete the opportunity cost, and I will have to rework my U and V. Okay. ये एक बस मैंने रखा है because I will be using it later. Fine. Now we'll again start with the values for U and V. तो आप बाकी का सब हटा दीजिए. We'll start afresh. This is 0.
अभी मैं थोड़ा सा फास्ट करूं, इज इट फाइन? एक्चुअली हम फास्ट कर सकते हैं अगर आप लोग भी जल्दी जल्दी रेस्पॉन्ड करें तो. The first allocation, value of V5 is equal to 3 minus 0. So 3. Now based on this epsilon, now U3 would be how much? 4 minus 3, 1. Now since I know that, so now I can calculate V2. V2 would be 4 minus 1, 3. I can calculate V3. It is 6 minus 1, 5. 6 minus 1, 5. Correct? Now since I have already got this one, I can calculate U4. U4 is 0 minus 5. So it is minus 5. What about U2? U2 is 6 minus 5, 1. Now since I have already got U2, so 4 minus 1. V1 is 3. Now let's look at the opportunity cost. Actually में ये काफी fast होता है as compared to stepping stone. ठीक है? So 0 plus 3 is 3, 5 minus 3 is 2. Please do let me know if you are unable to follow anywhere. Okay. 0 plus 3 is 3. 8 minus 3, 5. 6 minus 0 plus 5 is 5. So 6 minus 5 is 1. What about here? What would be the value here? Seven minus 4, 3. 3. 4 कहाँ से आया? 3 plus 1 is 4. तो 7 minus 4 is 3. आप लोग यार जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते, मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ. 1 plus 5 is 6. 7 minus 6 is 1. 1. What about this cell? 1 plus 3 is 4. 5 minus 4 is 1. Very good. चलो, अच्छा लगा कि किसी को तो मेरी पड़ी है. What about this? 4. 4. 4. Very good. What about here? 2. See, minus 5 plus 3 is minus 2. 0 minus minus 2 is 2. Very good. What about here? 2. 2. What about here? 0. 0 sir. 0. अभी तक एक भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिली है. यहाँ पर क्या हुआ? 2. Sir 2 sir. That means the solution obtained is an optimal solution. मतलब हम लोगों को फर्स्ट आइट्रेशन में ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया था, बट हमने गलत जगह पर एप्सिलॉन डाला, तो सिर्फ एप्सिलॉन का एक स्टेप बस मूव होने का काम हुआ. एक सेकेंड. Is there any background noise? No sir. No, sir. Okay, good. कोई तो पागल इधर पर ठोक रहा है. So I'm getting that noise, so I thought it should not disturb you all. Fine. So that means
The solution that we have obtained using Vogel's approximation method was the perfect solution. Actually में अपने को ज्यादा कुछ ऑप्टिमाइज करना ही नहीं पड़ा, और अगर हम लोगों ने एप्सिलॉन डायरेक्टली इसी पोजीशन में पहले ही ले लिया होता, अगर हम बोलते कि सिंस दिस इज अ डमी रो, ओके, तो हम डमी रो को ना लेकर के हम इधर पर लेंगे, सो अपना फर्स्ट इंस्टेंस में ही वी वुड हैव गॉट अ फाइनल सॉल्यूशन, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड टू गो फॉर Vogel's approximation method for optimization. So what is my total cost of allocation in this particular case? Is 8 into 3 plus 4 into 4 plus 1 into 6 plus 4 into 4 plus 2 into 6 plus 3 into 6 plus epsilon into 4 would be 0. Epsilon is almost equal to 0. So you can just ignore that. Plus 3 into 0. What is my total cost of allocation? How much are we getting? 68. Sorry? 68, sir. 68. यार कुछ गड़बड़ है, मेरे ख्याल से सेम रहेगा, 86 रहेगा, क्योंकि एलोकेशन ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं है ना. प्लीज चेक योर कैलकुलेशन. Yes, yes, sir. Sorry, 86. 86, huh? Yes, sir. Thank you. So my total cost of allocation would be 86. Is this the right answer or this is wrong? Let us relook at the question. The shipping cost is rupees 10 per load per kilometer, and this matrix is a distance matrix. Okay, so distance into 10 would be my total cost. So my total transportation cost (86 into 10), that is equal to 860. Fine. Perfect. Are we okay? Final answer आप क्या लिखोगे? The total cost of transportation is equal to 860 rupees with the above allocations, which is an optimal allocation. Fine. Yes, no. Sir, total cost allocation 92 आ रहा है. हाँ तो आपका 92 नहीं होगा बेटा. सर 92 आ रहा है सर. No, sir, जो it आपने is लिखा coming है 86. उसमें ना. ये देखिए, simple thing is I will just copy it. Let me open up a Excel sheet.
ब्लैंक एक्सेल शीट ओपन कर रहा हूँ। F2 equals to and the values say 92. फिर शायद मेरा पहले का गलत रहा होगा। फोर 8 into 3 plus 4 into 4 plus 1 into 6 plus 4 into 4 plus 2 into 6 plus 3 into 6 plus ये epsilon वाला 0 3 into 0. पहले वाले में मैंने कुछ मिस किया था क्या? 8 into 3 plus 4 into 4 ये मिस किया 1 into 6 plus 1 into 6 plus 4 into 4 plus 2 into 6 plus 3 into 6 plus 3 into 0. So 86 plus 6 92 ही आएगा। करेक्ट। मैंने पहले यहाँ पर गलत किया है। My mistake. It would be 92 only. तो आपका भी जो पहले का जो है उसमें आपको देखना है कि आपका सेम 92 ही आ रहा है कि क्या आ रहा है या ज्यादा आ रहा होगा। राइट? Is it okay? You need to be very careful when you are working it out. वो आपका मिस्टेक से पूरा सब गड़बड़ हो जाता है। Anyway, while checking, I always check everything. So not to worry. Steps वगैरह, allocations वगैरह सब कुछ वो करेंगे। देखिए। Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. What we'll do is we'll take up the next one. The next question is, the following table provides all the necessary information on the availability of supply to each warehouse, the requirement of each market, and the unit transportation cost in rupees for each warehouse. Now, since this is indicating transportation cost, so that means obviously will be required to minimize the allocation. Okay. The shipping clerk of the shipping agency has worked out the following schedule based on his own experience. So 12 units from A to Q. So यहाँ पर वो 12 का allocation डाल रहा है. Okay. What we'll do is we'll just copy this and we'll put it. Sir, ये क्या आप Excel में you're doing? हाँ. So this one you're doing in Excel. We'll be doing it in ये वाला को नहीं करेंगे. मैं बताता हूँ क्यों. क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको ना कोई एक बंदा आपको सोल्यूशन दे रहा है. ठीक है. So we'll have to assess his solution. Fine. तो इसको मुझे थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. कंट्रोल ई करके सबके एक्स्ट्रा स्पेसेस पहले ट्रेलिंग स्पेसेस जो है वो निकाल दिए.
These are my warehouses. Correct. ABC and AQRS. These are my market. तो दिस इज माय टेबल. अब इसको हम उधर पर डाल लेते हैं और एलोकेशंस डाल करके विल चेक. ठीक है. All this would be right aligned. Fine. Now, let me just copy the statement from here. It says this is the schedule which has been allocation which has been provided by the shipping clerk. So let me just put it here and उसको हम लोग workout करते हैं. Fine. The shipping clerk of the shipping agency has worked out the following schedule based on his own experience. 12 units from A to Q. 12 units from A to Q. And 12 units. So 12 units from A to Q. After that, 1 unit from A to R. So 1 unit from A to R. Then 9 units from A to S. Then 15 units from B to R. 15 units from B to R. After that, 7 units from C to P. And then 1 unit from C to R. Is this a basic feasible solution? Is this a basic feasible solution? Yes, sir. Okay, good. What are the conditions for a basic feasible solution?
the demand and supply constraints should get satisfied. So what he's saying is 12 plus 1, 13 plus 9. 13 plus 9 is 22. So this is fine. 15. 7 plus 1, 8. Column wise 7, 12, 15, 16, 17 and 9. So all the row and column constraints are getting satisfied. So we can consider this as a basic feasible solution. Okay. So we can say the allocations suggested by the clerk is a basic feasible solution. We can call it as initial basic feasible solution. Fine. But still we need to check for optimality. Correct? तो कैसे चेक करेंगे फॉर ऑप्टिमैलिटी? उसने जो सोल्यूशन बताया सही है कि नहीं है, तो उसके लिए पहला हमने देखा कि बेसिक फिजिबल है, फाइन. अब ऑप्टिमैलिटी चेक करना है. ऑप्टिमैलिटी चेक कैसे करेंगे? कोई कुछ बोलता ही नहीं है यार. Sorry, by using UV method. Yes, by using UV method. Is it balanced? Yes, sir. No. Yes, sir. 22 plus 8 is 30 plus 15 45 and is 45. 45. What about this Yes, sir. side? 45, sir. So it is balanced. So we can just simply go ahead without adding any dummy row or a column. नहीं तो हमेशा पहले ये चीज चेक करना है. Fine. So U2, U3. नहीं तो जैसे हम लोग लास्ट टाइम हमने किया था और फिर अपना टाइम वेस्ट हो गया, वैसे होगा. तो V1, V2, V3, V4. So this would be V2, V3, V4. कहाँ से चालू करेंगे? What about the number of allocations? M plus N minus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The number of allocations is 6. Correct? And what about our M plus N minus 1? 6. That is also 6. So मतलब basic feasible solution बराबर है. This is not even a degenerate solution. If the number of allocations would have been less than 6, then we would have said this is a degenerate basic feasible solution. Fine. अब we'll start with U1 equals to 0. या चलो इस बार हम थोड़ा उल्टा करते हैं. U3 equals to 0 से शुरू करते हैं. Fine. So V1 क्या होगा? 5 minus 0, 5. What about V3? 8 minus 0, 8. Since I have already got V3, now can I calculate U2? 2 minus 8, minus 6. Minus 6. Can I calculate U1? कितना आएगा U1? 5 minus 8,
-3. Very good. What about V2? Three minus of -3. Correct, na? Cij. 6. So 6. this would be 6. 6. What about V4? V4 would be how much? 7. 7. 4 minus of -3. So 7. Now let us look at the opportunity costs now. Okay. So हम पहले यहीं पर डालते हैं opportunity cost. How much will be the opportunity cost here? -3 plus 5. -3 plus 5 is 2. 2. 6 minus 2 is 4. 4. अभी इस रो में कुछ भी नहीं बाकी है. Let us move to the next row. यहाँ पर क्या आएगा opportunity cost? -6 plus 5. -6 plus 5 is -1. 5 minus of -1 would be 6. Perfect? Yes, no? Yes, sir. Okay. तो अभी यहाँ पर बताइए क्या होगा? Yes, 9. 9, sir. it would be 9. Very good. What about the next allocation? Here, 6. so 7 minus 6. 7 minus 6 would be 1. So 7 minus 1 is 6. What about this? Six plus 0 is 6. 7 minus 6 is 1. 1. भाई ये तो लगता है अपना क्लर्क एकदम स्मार्ट निकला. What about this? 0 plus 7 -1. -1. minus 1. Oh, थोड़े से के लिए मिस हो गए. So that means since since the opportunity cost for CS for the cell CS is equal to -1 means the solution suggested by the clerk is not optimal. Clear? Yes, sir. And it needs optimization. अब अपने को सिर्फ ऑप्टिमाइज करने का, बाकी सब काम उसने करके दिया है. करेक्ट ना? तो अब ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे? We will assume an allocation. Correct?
and we'll place it in the cell bearing that negative value. बाकी किसी में भी negative value नहीं है ना, सिर्फ ये एक ही है. And from here we will start formulating our loop. So +1. What would be the next one where you will put -1? बताइए, मुझे नहीं आता, आप बताओ. CR. Sorry, C R. R. CR. Very good. So we'll take this one as -1. What about +1 now? वो कहाँ डालेंगे? AR. 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 What about -1? AS. A. S. Is our loop complete? Yes, sir. Yes. Okay. What will be the theta value? 1. Theta would be 1. तो क्या होगा? अब अपना रीएडजस्टमेंट्स होगा, करेक्ट? कहाँ इसको अभी काम करते हैं? We'll just duplicate this and we'll do the readjustment in the new set, in the new table. Fine. So theta is 1. तो यहाँ पर से हम क्या 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा. पहले तो 1 यहाँ पर ऐड होगा, करेक्ट? तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जस्ट हटा देता हूँ so that I have a place to put this. So 1 will get added because there is no allocation. So 0 plus 1, 1 will come here. What about this? 1 minus 1. So this allocation will go away. What about here? It will get added here. So 1 plus 1, 2. What about this? 9 minus 1, 8. 8. Okay. So now we have already got a readjusted new table. Fine. So अभी एक काम करते हैं फटाफट. Can you guys check for the optimality on your own? And now I am going to randomly call out names who will tell me whether the solution is optimal or not. Okay. So please be ready. Take 5 minutes. You can start with either u1 equals to 0 or anywhere, anything.
Done. Has anybody been able to complete it? Sir, 5 minutes, please. Okay. Done. Is this solution an optimal solution now? Yes, sir. Yes, sir. Good. Now I will just put out names of some people and they are going to help me out with the values for U and V. Okay. Ridhima, Yes, sir. you will have to help me with the values for U and V. I Yes, would sir. say if I'm Yes, I'm starting still C1 doing. equals to 0, Yes, sir. what would be the value for V2? 3, 3. What about V3? 5, 5. V4? 8. 8. Now, Sorry, 4, 4, 4. I said 8 6. by mistake. Uh, now, Mohammadi Sabir, Yes, sir. you will help me with values for U2 and U3. Sir, U2 U2 for -3 minus 3. What about and U3? 2. U3 would be 2.
2। यहाँ पर से हम डायरेक्ट सीधा U2 कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? हाँ, 6 minus 4. Good. What about V1? Sabir? Sir, 3. V1 would be your. Yes, sir. हाँ सुयो, आजा भाई बोल. What would be the opportunity cost for this cell? 3, sir. 3. Very good. जब ज्यादातर लोग ऐसे मेरे को आंसर देंगे ना, तो उसके बाद में आई विल स्टार्ट फीलिंग कि हाँ यार मैंने अच्छा काम किया. अगर मेरा बच्चे लोगों को आंसर देने को आ रहा है, so that means I am doing a good job. What about this? 3, sir. 3 minus 3 would be 0. 5 minus 0 would be 5. Sorry. 5. Okay, कोई बात नहीं. What about this one? 9. It would be 9. What about this one? 6. Minus 3 plus 4. Minus 3 plus 4 is 1. 7 minus 1 is 6. Very good. Acha, abhi now let me call another name. Zina. Yes. Zina. Are you there? yes, Are sir. you? हाँ बोलिए. How much would be the opportunity cost here? Sir, 7. Sir, 2. Plus 2. 2 plus 3 is 5. 7 minus 5 is 2. 2. Good. 2. हाँ good. कोई बात नहीं. थोड़ा सा केयरफुल रह के करने का. Come here. Now tell me about this. Sir, 1. 1. Very good. So since we have got all the opportunity costs as positive, so that means the solution obtained is an optimal solution, and this is what can be suggested to the clerk. Follow this schedule. Fine. So now let's come to the second part of the question. This question thoda special hai because of this. If the clerk is approached by a carrier of route C to Q and offers to reduce his rate for the route by ₹2, will the optimal solution change? If yes, what is the new optimal solution and the minimum total transportation cost? C to Q by ₹2. So let's go back and see this. C to Q. The opportunity cost is 2. मतलब यहाँ पर अगर एलोकेशन होता तो ₹2 से कॉस्ट बढ़ जाती थी. बट यही रूट वाला वो बंदा आके आपको बोलता है कि भाई मैं ₹2 से कॉस्ट कम करने को तैयार हूं. So that means this will give me an alternate solution if I consider his request. But my total cost of transportation will not reduce. Are we clear? Yes, sir. ठीक है, समझ में आया कैसे यूज करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को? Sir, please repeat. देखिए, C टू Q वाला जो ट्रांसपोर्टर है वो आपको आके बोलता है कि भाई मैं ₹2 से कॉस्ट कम करने को तैयार हूं.
पर यूनिट एलोकेशन मैं 2 रुपए कम करूंगा. So if he is ready to reduce the cost by 2 rupees, so that means यहाँ पर अगर मेरा allocation होता without any discount, so it would have increased my cost. But now since he is ready to give me a discount of 2 rupees, it will not increase the cost. It will be equivalent. So my opportunity cost instead of 7, this would be 5. So 5 minus ये 2 plus 3. 5 minus 5 would be 0. So my opportunity cost would have been 0. So that means it would have given me an alternate optimal solution and the cost would have not changed. Total cost would have not changed. Clear? Yes, sir. Acha. Abhi, let us consider another situation, say for BQ. ये ट्रांसपोर्टर आता है और आपको बोलता है भाई मैं 4 रुपए डिस्काउंट देता हूं पर यूनिट एलोकेशन के लिए. Will you consider his request? Will you consider his request? No, sir. Very good. Why? उसका रिक्वेस्ट कंसिडर करने के लिए आपको कितना तक डिस्काउंट उससे मांगना चाहिए? 6. 6 or more. 6? No, 9 rupees. 9 रुपीज अगर डिस्काउंट करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 रुपीज में दे, फ्री में करके दे. Yes, yes. ठीक है. But let us look at another option. This one, A to P. इस ट्रांसपोर्टर से अगर आपको नेगोशिएट करना है तो आपको इससे कितना रिड्यूस करवाना पड़ेगा? कम से कम 3. क्योंकि 3 से जब नीचे जाएगा तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर नेगेटिव में आएगा. दैट मीन्स आपका कॉस्ट रिड्यूस होगा. बट अगर उसने सिर्फ 3 के ही बराबर किया so it will be an alternate solution. Clear? Yes, sir. अब आपको समझा कि प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब हुआ? समझे ना? आप इसको यूज कैसे करोगे डिसीजन मेकिंग के लिए? लाइफ में ऐसे कई वेंडर्स के साथ में इंटरेक्ट करना पड़ेगा, फिर किससे कितना नेगोशिएट करना है वो सब आप इधर से वर्कआउट कर सकते हो. ठीक है. So the solution obtained is an optimal solution. The transporter C to Q request can be considered to identify an alternate optimal solution, but it cannot be preferred because the total transportation cost remains unchanged. समझा? For that route to be
considered the total discount offered should have been more than the opportunity cost of that particular cell. Fine. Is it okay? याद रहेगा अभी ये? Yes, sir. Okay. So we'll take up the next one now. और उसको हम लोग या इसी को हम लोग ऐसे करें. You can take. This is basically about prohibited transportation routes. तो जो हम लोगों ने जैसा prohibited transportation वाला ऑप्शन prohibited assignment हम लोगों ने किया था ना, कुछ सेम लॉजिक हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा. So I would request you to apply your brains and consider this as a homework. We'll discuss it tomorrow. But उसके पहले let me show you how to work around the same thing in Excel. Okay. So हम लोग ये वाला टेबल लेते हैं and we'll take up this. आप एक काम कर सकते हो, या तो नीचे ले सकते हो या फिर इधर साइड में एलोकेशन टेबल आप साइड में बना सकते हो. दिस इज माय कॉस्ट टेबल. फाइन. यहाँ पर मैं मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैलकुलेट करूंगा. फाइन. इसको भी थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं सो दैट लुक्स गुड. और यही सेम चीज आई विल recreate it. Okay, and this would be my allocation table. अब allocation table में यहाँ पर मुझे summations डालना होगा equals to sum of the above column. Similarly for the other columns too. And यहाँ पर it would be equals to sum of this. अब since it's a balanced problem, तो जैसा हम लोगों ने इसके लिए किया था, क्या बोलते हैं, असाइनमेंट के लिए सेम मेथड यूज कर सकते हैं. सो दिस वुड बी इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट ऑफ दिस एरे कॉमा दिस एरे. अभी इधर पर देखते हैं वन डाल के कि हमको बराबर वैल्यूज आ रही है क्या. करेक्ट. बट इस केस में एक चीज है, हमको इधर पे 1 डाल करके रेफरेंस सेट करने की जरूरत नहीं है. इंस्टेड इसकी जगह पर these values will be compared with these values. So that means sum total of this should not be more than this value. Correct. या हम equals to कर सकते हैं. Fine. So let us go to our solver. Click on solver. What is my objective value? Objective value is this sum product. Here the objective is to minimize because we are talking about cost. The values that we have to put, the variable cells would be, these cells are going to act as variable cells, and my constraints would be, I will have a demand constraint. अभी के लिए हम लोग कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे. We'll put it as equal to this value add, and this value should be equal to these values.
और कुछ ऐड करने की जरूरत है क्या? यहाँ पर बाइनरी नहीं आएगा बिकॉज वी डोंट वांट ओनली जस्ट वंस एंड जीरोस, वी वांट मोर देन दैट. So make it simplex LP and say solve. Click on OK. आपको कुछ ऐसे ही आंसर आया है क्या उधर पर? वो क्या हो गया था, एक सेकंड. सॉरी. सर. हाँ, सर एक बार कंस्ट्रेंट्स फिर से बताओगे? इसमें आंसर में कुछ तो गड़बड़ हुआ है. नहीं, 12 to 8 बराबर आया. I'll show you the constraints. Constraints आपके इधर पर क्या रहेंगे? एक मिनट, I will just delete the constraints and I will add them again. देखिए, constraints would be these demand values will be equal to आपके जो सेट किए हुए constraints and demand. Second is this supply should be equal to जो आपको ऑलरेडी पहले दिए हुए हैं. ओके, जस्ट से ओके. इसके अलावा बाकी और कुछ भी एज अ कंस्ट्रेंट नहीं आएगा एंड जस्ट सिंपली से सॉल्व. ठीक है, सेम सॉल्यूशन मिला है हमको जो हमने उधर पर वर्कआउट किया है. फाइन. Sir, so this can we do in exam? This method. You can, provided the examination is an online examination. In case if it is offline, then you may not have access to laptop. ये ज्यादा अच्छा मेथड है ना बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है, ना ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए वर्कआउट करना है, सब कुछ काम हो जाता है. Yes, sir. ठीक है, चलो. सर तो आपने खाली सप्लाई डाला ना और डिमांड बस कंस्टेंट्स में. हाँ हाँ, बट दिस सिंस दिस वाज अ बैलेंस प्रॉब्लम, इसके लिए ऐसा किया है. अगर बैलेंस नहीं हुआ तो क्या करना है, दैट आई विल टेल यू लेटर. ठीक है, पहले ABCD करेंगे फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे. फाइन. Yes, sir. Yes, So sir. this is how you will check your answers. When at home, when you are doing it for your assignments, this is how you can check your answer. Fine.